So let's get started. तो हमने basically what we did was हमने networking पढ़नी शुरू की थी और हमने उसके अंदर VPN पढ़ा था basically, right? Very briefly we looked into VPN. So let's go a little bit deeper into virtual networks. Yeah. Virtual networks के अंदर हमने सबसे पहले when we do virtual networks, ये हमने बनाया था virtual network और इसके अंदर what we did was हमने इसी की एड्रेस स्पेस रखी थी। तो इसमें आप किसी को पता कि इसमें कितने एड्रेसेस हैं? इफ आई डू दिस /16 इसमें कितने एड्रेसेस हैं मेरे पास? तो ये हमारी यहाँ पे जो एड्रेस स्पेस है इट इज 10.0.0.0/16। एनीबडी नोज? कोई बताएगा कितने हैं इसमें मेरे पास एड्रेसेस इन टोटल? Good. 65536 या if it's base 1 or from base 0 it's 65535. आप इतना ना म्यूट हटा के you can talk for example. Right? But yes, तो हमारे पास है basically from 0 to 65535. Yeah. जो important चीज हमने पढ़ी थी, this is the subnet mask. Subnet mask means, this is what subnet mask means. So yeah, please pay attention. ये मेरे इसके अंदर these are very critical concepts. जो हमारी assignments है in class, which is like a minor project. I will ask some of these things. ये design questions are very critical. Okay, so please pay attention. This is essentially equivalent to, ये मैंने वीडियो भी डाली है वैसे इसकी, सही है? सही है? /16 equals to this. सही है? And what this means is, वो ये कहना चाह रहा है कि आपका जो फर्स्ट ऑक्टेट है और जो सेकंड ऑक्टेट है, सही है? इट इज नॉट यूजेबल फॉर यू। कि जो आखिरी दो हैं यू कैन यूज ऑल ऑफ इट, सही है? इसी तरह अगर मैं कहूँ इसको, तो दे आर फर्स्ट टू ऑक्टेट्स आर मास्क्ड। अगर मैं से कहूँ 24, सही है? इट विल बिकम लाइक दिस। वो कह रहे हैं कि तीन जो है 24 बिट्स, सही है? These are essentially bits. So 16 bits, which is the first octet and the second octet, ये 8 bits and 8 bits. और यहाँ पे कितनी कह रहे हैं? 24 bits. हमारी total 32 bits है। वो कह रहे हैं 24 bits are masked for you. आप सिर्फ आखिरी जो octet है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। Then you go from 0 to 255. सही है? ये जो है ये इसकी फुल नोटेशन है और इसकी एक छोटी नोटेशन है, ये एब्रीविएटेड नोटेशन है इसी चीज की। तो हम अगर विंडोज में जाएं, फॉर एग्जांपल इफ आई गो इनटू विंडोज, अगर मैं यहाँ पे जाऊं, लेट लीजिए नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स, एडवांस्ड नेटवर्क सेटिंग्स, लेट्स सी इफ आई कैन चेंज समथिंग। सो या एडिशनल प्रॉपर्टीज, देखना चाह रहा हूँ कि इसमें इफ आई कैन गेट टू द क्या कहते हैं, ठहरो, लेट्स सी इन द आईपी कॉन्फ़िग। If I do IP config over here, देखो subnet mask is given to me for this one. Yeah.
मुझे यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास इतने बिट्स हैं फॉर एग्जांपल टू प्ले विद, फॉर एग्जांपल जो मुझे इन लोकल होम नेटवर्क के अंदर सबनेट मास्क है मेरे पास, और इसके अंदर आई नीड टू सी नेटवर्क सेटिंग्स, लेट मी सी नेटवर्क इथरनेट सेटिंग्स। इसका पुराना एक होता था वो बड़ा, इट वाज वेरी क्लियर एक्चुअली, यू कैन सी द हाउ डू यू सेट अप द सबनेट मास्क एक्चुअली उसके अंदर। आई विल चेक इफ आई कैन ऑथेंटिकेशन सेटिंग्स टू सी, आई मीन कहाँ पे है वो, लेट मी सी इफ आई कैन गो इनटू सिस्टम सेटिंग्स, इट्स ओवर हियर। हाँ ये वाला, ठीक है। अगर आप इस पे आओ ना यहाँ पे, यू विल सी, अगर आप यहाँ पे टीसीपी भी सेटिंग पे आओ ना, यू विल सी यहाँ पे सबनेट मास्क, सही है। यू डिफाइन यहाँ पे आप /24 नहीं कह रही या /32 नहीं कह रहे, यहाँ पे यू आर प्रोवाइडिंग सबनेट मास्क, ठीक है पूरा, जस्ट टू शो यू हाउ दीज थिंग्स वर्क, सही है। ये असल में इट्स अ होल थिंग 24 एंड दीज थिंग्स आर एब्रिविएशंस बेसिकली, सही है। गुड, इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन, एनीथिंग ओवर हियर? यहाँ हमने /16 कहा है, that means it's the combination of this and this. So yeah, 255 times 255. If I do this, 255 times 255, 655. हमें कितना है? 355. So हमें actually it's not 255. It's 256 times 256, right? 256 times 256. So yeah, this is what we have: 65536 if it's base 1. But basically, we have this many addresses, whether it's base 1 or base 0, we have this many addresses. And that tells you, you have 0 to 255, which is 256 addresses. Same thing over here as well. So, yeah? So this is what gives us this much. So when we do 24, I mean, it's 256 मिलते हैं basically. So, yeah? And so on and so forth. इसको मैं और छोटा करूं अगर इसको, if I say 27, if I do 27, what will happen? तो यहाँ पे जो मुझे मिलेगा, if I do this over here, क्या नंबर आएगा यहाँ पे? तो बता सकते हैं मुझे? यहाँ पे मेरी 27 बिट्स मास्क हुई हैं, 10 ये भी हो गई, ये भी हो गई, सही है। 24 यहाँ तक हो गई। I have 3 more bits. If I have 3 more bits over here, अब क्या नंबर आएगा मेरे पास? और 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये लास्ट ऑक्टेट, हमें 3 बिट्स हमारी खत्म हो गई हैं, सही है, ये मास्क हुई हैं। दैट मीन्स 2 0 1 2 3 4, सही है। So 2 raised to power 4 plus 2 raised to power 3 plus 2 raised to power 2 plus 2 raised to power 1, सही है। क्या हो जाएगा बताएगा इसको करके, कैलकुलेट करके? This is basically this is 2 raised to power, अगर मैं करूं 2 0 plus 0 1 224, how it can plus, let's see, 24 plus 2 raised to power 1 is 2. It cannot be 224, right? It has to be an odd number, it seems. So you're talking about the available addresses or the number that should come in the mask? First of all, the number that should come into the mask. जो addresses हैं वो मेरे पास हैं already. I know I have 32 addresses in /27. Okay. So मैं subnet mask calculate कर रहा हूँ. When I have 27, from the same logic, I'm trying to calculate मेरा number यहाँ पे क्या मिलेगा. देखो जब मैंने यहाँ पे किया था, यहाँ तो पूरा था, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी बिट्स मिली हुई थी, सही है। You can see ये नंबर चेंज हुआ है from 255. That means all the bits are not masked. सही है, it's 16 less actually from 256, और 255 से कितना कम है? 15 कम है।
तो ये 15 इज, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा 4 बिट्स आर एक्चुअली 1 2 4 8, ये 15 हो गया आपका। वो बता रहा है आपको 4 बिट्स मिली हुई आपके थर्ड ऑक्टेट के अंदर, सही है, बाकी मास्क हुई हुई है और बाकी पूरा मिला हुआ है, सही है। दिस इज व्हाट 240 इज। और यहाँ पे क्या आ गया प्लस 16, तो 16 प्लस 8 24 प्लस 4 28 30 31, सही है। दिस इज समथिंग लाइक दिस 31। यहाँ पे मैं /27 will map to something like this, या अब खुद भी वेरीफाई कर लेना if I've made any mistake, सही है। बट कहने का मकसद ये है 27 is giving me how many addresses? 32, and 32 will fit, sorry, 32, सही है। So which is essentially for example this is 0 to 31. Anyway, this thing we need to be very clear कि हमें क्या चीज हो रही है और हमें क्या चीज मिल रही है और क्या मास्क हो रहा है हमारे लिए, सही है। तो कह रहे हैं हमारे एक्चुअली मुझे ये चीज, सॉरी /27 I will mask these ones, these top 3 ones, right? This is 2 raised to power 7, sorry 8 plus 7 plus 6. Let me just do this. 2 raised to power 8. Sorry. So it would be 128 plus 64 plus 32. So that would be 224. 224. यहाँ पे you're saying 224. So that makes sense. ये मेरी बिट्स जो है वो मैस्क हो जाएंगी यहाँ तक, सही है। And I will get only this one, which is will give you 31 or 32 addresses, basically zero based, सही है। तो 128 plus 64 plus 32 basically, right? तो मेरी ये 3 बिट्स जो हैं मैस्क हुई हैं basically. I cannot use them, which is 128 plus 64 plus 32. कितना हो गया 196 to 224 हो गया, सही है। Good. So this is the subnet mask actually, and this is the abbreviated that tells you I have only the last 5 bits to play with. That'll give me 32 addresses. Yeah. यहाँ पे, so this is what it is, right? Next thing we saw was subnets. हमने कहा था we can divide these things into individual address spaces, सही है। तो हमने default बना हुआ already, and what I can do is I can do subnet, सही है। Sorry, I can do different subnetting. I have this one 10.0.0.0. ये मैंने वीडियो वैसे डाल दी हुई है just to take a look. So ये मैं उसको बेस डिटेल में जा रहा हूँ थोड़ा सा because very critical topic, right? अब इसके अंदर मैंने एक क्या ले लिया मैंने subnet already is taken. If you look at it, 10.0.0.24. 10.0.0.0/24. ये कहां से कहां तक जाएगा? ये कितने एड्रेसेस है मेरे पास इसमें? So मेरा only सबनेट है last डिफॉल्ट octet is available. सिर्फ ये चेंज होगा and it'll go from all the way from 0 to 255. सही है? This is the main thing to understand is ये जो है it'll go from, for example, 0 to 255. सही है? This is what it maps to. अब यानी कि मेरा 10.0.0 and this is used already. I can do the same thing now. I can say, for example, subnet, and this is the naming convention, subnet, for example, infrastructure. I can say 10.0.1.0. ये क्लियर है सारों को मैंने क्या किया अब इसके अंदर? Anybody has any doubts? ये मैंने क्लास में भी समझाया था कि this can go from 0 to 255.
and this can go from 0 to 255. The whole addresses are 256 times 256, which is 65535, right? Yeah, I think you should have issue. हर एक को नजर आ रही है स्क्रीन? आप अगर किसी को स्क्रीन स्टक है, यू कैन डिस्कनेक्ट और वहां से फिर से रिकनेक्ट हो. स्क्रीन मूव हो रही है मेरी? एवरीथिंग इज ओके? जी सर. सर ये जो आखिरी दो हैं डिफॉल्ट और एसनेट इंफ्रा, ये मुझे समझ नहीं आया. हमारे पास ये नेटवर्क था, सही है, ये हमारे पास नेटवर्क है. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये हमारे पास नेटवर्क है, सही है. हमने ये नेटवर्क बनाया हुआ है. दिस इज द, ये हमारे पास एड्रेसेस हैं टोटल. क्लियर है यहाँ पे? अब हम इसकी सबनेटिंग करने आए हैं. हमारा एक सबनेट बना हुआ है ऑलरेडी डिफॉल्ट के नाम से, सही है. ये डिफॉल्ट के नाम से बना हुआ है और उसकी जो रेंज है, इसके अंदर जो आईपी एड्रेसेस आ सकते हैं, दैट इज 10.0.0/24. वो आपको बता रहा है कि अवेलेबल आईपीस कितने हैं. इट शुड बी 255 एक्चुअली. एज्योर 4 आईपी एड्रेसेस ले लेता है आपसे, तो ऑलवेज ऐड +4, तो इट्स टेलिंग यू इट्स 255 बेसिक. 5 लेता है एक्चुअली, इट शुड बी 256, सही है. तो 5 आईपी एड्रेसेस आपके ले लेता है. तो पॉइंट इज इट शुड बी 255 यहाँ पे, और जीरो बेस इज 256, सॉरी 255. इज दिस क्लियर कि हमने उसके अंदर से एक सबनेट बनाया है विद दिस वन, एंड इट हैज हाउ मेनी आईपी एड्रेसेस? 256, सही है. ये क्लियर है कि ये नहीं क्लियर? तो इफ आई वांट टू हैव द लास्ट ऑक्टेट सबनेट मास्क, अगर मैंने 24 लगाया इसका, जिस तरह मैंने ये बताया था 24, वो कह रहा है आपके पास ओनली लास्ट ऑक्टेट जो है, यू कैन यूज दिस वन, ओनली द लास्ट ऑक्टेट, सही है. So you can only, so last octet can go from 0 to 255. So I can have this many IP addresses if I do /24, which I've done over here. This is what we call carving out subnets. और एक VNet के अंदर से we are taking out or creating subnets, separate subnets. जिस तरह क्लास में मैंने एग्जांपल दी थी, you have 3 rows. They can act as 3 different subnets. I can isolate things differently, right? मैं इसके अंदर virtual machines बना सकता हूँ, मैं दूसरे के अंदर कोई और virtual machines बना सकता हूँ, and so forth. I can delete this one also. Let's create from scratch. This is our really starting point. See, there is no subnet now. अब मैं subnet बनाता हूँ इसके अंदर. I can say SNet and I can say infra for infrastructure, for example. क्या मैं ये कर सकता हूँ ये वाला? क्या मसला है इसको? वो मुझे बताएगा क्या मसला है इसमें? ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे. प्लीज पे अटेंशन एंड प्लीज अंडरस्टैंड इफ इट्स नॉट क्लियर. सही है? एनीवन? इसमें क्या मसला है? क्यों कंप्लेन कर रही है और क्या कह रही है? Sir, we are changing within the first 2 octets and we only have permission to change the last 2 octets क्योंकि हमारा /16 हमें मिला हुआ है, तो we can't change. /16 मिला. हमने पहले ही कहा था कि हम तो पहले 2 चेंज कर ही नहीं सकते. These are masked for us. सही है? उसने कहा कि ये 2 जो पहले हैं आपके पास, आप तो चेंज ही नहीं कर सकते. आप इसको 1 क्यों कर रहे हो? आपको तो जो इजाजत मिली है वो इसकी मिली हुई है, और इसमें से आपको इजाजत मिली है कि आप ये 2 पहले ऑक्टेट टच नहीं कर सकते. और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है आपके पास तो ये है ही नहीं, आपको तो 000 मिला हुआ है, ये 10 0 तो है ही नहीं आपके पास, 10 1 तो है ही नहीं आपके पास.
is not contained in this virtual network address space. ये आपके पास नहीं है ये, सही है? तो हमारे पास जो playing field है, that is only the last two octets, सही है? Now he is happy, सही है? तो जो मैंने बताया था, this can go, we can change this from 0 to 255, and we can change 0 to 255. And this one, we are saying, this when we just say /24, we are saying we'll play with last octet. हमारे ये तीन, अब इसके अंदर mask, subnet mask हमारा 24 है. That means this will change. This is the only one it will change in this one. ठीक है? ये हम जो subnet mask रखते हैं, वो बताता है कि इसके अंदर क्या IP addresses आ सकते हैं. So it never overlaps or crosses into somewhere else. ठीक है? It checks all of that for you. मैं एक और सबनेट बनाता हूँ, इसके अंदर मैं कहता हूँ SNet और ये मैं कहता हूँ apps. Let's say now 0 is gone. I have to move to 1 because with 0, ये मैंने बताया था यहाँ पे, this means, let me make it further clear. This means that this can go from 0 to 255, and this can go from 0 to 255. So yeah, ये आपने अगर statistics पढ़ी हो, ये basic combinations है, right? I can have 256 times 256, this many combinations of IP addresses, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, on and on, up to 255. Then 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. सही है? ये 1 आता रहेगा. सही है? And we can show, just to be extremely clear, right? I will open in Excel. Sorry. Sure, Excel दिखा रहा है यहाँ पे. Hold on. So I can do just to ये मैं explanation के लिए बता रहा हूँ थोड़ा सा. It should be clear already though. So it can go from 10, 0, 0, 0, right? So yeah, 0 के लिए it will go from all the way to 255. So yeah. Now I will do this again. One, again same thing. So yeah, and again same thing. So yeah, ये मेरे पास possibilities है इसकी. So yeah, and it can go from up to 255. So yeah, so that's why the total amount of IP addresses that I have in this one 10.0.0.0/16 is 255 times 255, which is 65535. So yeah, you should be clear. तो मैंने ये जो 10.0.0.0 जब मैंने /24 किया था, each thing is /24 basically. So yeah, because it has 255 IP addresses. Now I have finished this one. When I say /24, this is all these ones possible in that subnet. Now I'm moving to second one. 10. This is also /24 if I want to get all of them. मैं अगर इसको कहूँ यहाँ पे /24,
इसके अंदर. So I'm taking the next full thing. I don't have to. I can break it down also. मैं भी दिखाता हूँ उसको break down करके भी further. तो ये मेरे दो subnets हो गए. I can do another one. Subnet, for example, containers 01. इसमें मैं कहता हूँ this is 20 and I will say 7. So yeah, I'm going to have 32. इसके अंदर मैंने क्या किया है, मैंने क्या इसको लेके मैंने /27 लिया है. It'll go up to 32. I still have 255. उसमें 32 का मैंने एक सबनेट बना लिया. मैं इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर रहा हूँ इस एड्रेस स्पेस को. I can say snet container 02 /32. तो ये मैं उसी एड्रेस स्पेस को मैं फर्दर ब्रेक डाउन करता जा रहा हूँ. प्लीज बी वेरी क्लियर ऑन दिस वन. सही है? On the IP addressing scheme. It's very, very basic stuff. कोई ना समझ आए, ask me. Yes, I can use only last two octets because I have said /16. /16 says I am masking to the first 2 octets. You cannot use them. So when you do /16, it gives you permission to use only the last 2 octets. So yeah, be very, very clear on this one. See, ये मैंने इसको जो खोल के लिखा था यहाँ पे, this is specifically to show कि आपके पास सिर्फ ये जगह है यूज करने की. यहाँ पे ये चीज ये जो पहले 8 बिट्स हैं, ये सारी की सारी आपकी वो हो गई ये मास्क. यू कैन नॉट यूज दैम. जिस तरह मास्क होता है ना छुपाने के लिए, इसीलिए हमने उससे when we say /16, this is what it means. इसने सारी चीजें छुपा ली आपकी. फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स छुपा ली. आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. वो आपके पास इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ लास्ट 2 ऑक्टेट्स हैं. सही है? अब लास्ट 2 के अंदर आपको फुल परमिशन है. यू कैन गो फ्रॉम यू कैन यूज द होल थिंग. सही है? अगर इसमें छोटा होता है यहाँ पे, ये देखो जिस तरह यहाँ पे जो मास्क है इट इज 240 0. इट मींस तीसरे ऑक्टेट के अंदर भी मेरा वो हिडन है, क्या कहते हैं, I mean I mask something, right? Most of the higher level bits, I think 6-7 bits are masked basically. 4 or 5 bits are masked already. So yeah, इसके अंदर 240. Anyway, to keep things simple. So this is what IP addressing is. So yeah. इसके अंदर मैंने बताया था private endpoints. There are different kind of endpoints we'll have. We'll go into this later on. More importantly, right now is to understand कि हमारे पास यहाँ पे these are the kind of endpoints that we have. ठीक है? हमारी क्या connectivity है और हम क्या available है हमें उसके लिए. Please be very clear. अगर we need to access something from anywhere over the internet, सही है? हमारी virtual machine है, and we need the VM to be accessible from anywhere over the internet. We need the public endpoint. If we want the resource to be accessible only from within the network, we just need the private endpoints. Private endpoint could be just the private IP address. And the other things also important. Public endpoints की example है public IP address. There could be other things as well. But main चीज है यहाँ पे public endpoints. For example, let me see. Yeah. So if I say public endpoints, for example, I can have public IP address. So yeah, and you can see this one over here in Azure also, right? If I go over here and say public IP addresses, you can see public IP addresses are here. I can create a public IP address. So
और उसके अंदर I can, for example, in these things, right? And I can attach it to something else as well. So, yeah. I can create a virtual machine और उसके अंदर मैं लगा सकता हूँ. For example, if I go into and say, let me see if I have a virtual machine. Let me switch to a different directory. So I have over here, let's say virtual machine. And if I go into the networking part in this one, and you can see it has a public IP address. So yeah, this is the public endpoint for this virtual machine. If I start this thing, so yeah, it's a public IP address, nothing special, and this is associated with this virtual machine. So yeah, so now your virtual machine will start over here. It's running. So what I can do is let's try to connect. How can I connect to this virtual machine? How do you connect to virtual machines? Windows virtual machine. क्या प्रोटोकॉल और क्या प्रोग्राम हमने पढ़ा था इसके लिए? Sir, through virtual desktop. नहीं, virtual desktop that is a service है वो Azure virtual desktop. हमने कहा था remote desktop Windows के लिए. सही है? If I do remote desktop, सही है? वो तो सर्विस है ना remote desktop की AVD. That is an implementation of VDI services virtual desktop की. But if I need to connect to a single virtual machine, मेरी अपनी virtual machine है, how do I connect? I connect to remote desktop. ये मैंने IP address डाल दिया उसका. सही है? You can see ये internet के ऊपर it's running somewhere in Azure cloud, and based on the public endpoint, I should be able to connect with this one. Let's see if it's allowed, by the way. By default, it is right now. इसने allow नहीं किया हुआ मुझे from the firewall. So yeah, but let's see. It is not allowing. See, let's see if I can add an inbound route. Source any, source port any, destination any. Can do IP address. So yeah. Let's see what my IP address is for this one. तो इसके लिए ये हम वो करते हैं कि we provide some rules कि who can connect, right? IP, and I can say destination IP address. Services, see RDP. I'm opening RDP. So yeah. Let's see if I can do 2600. These are like a firewall rules. I'm allowing that anybody can go and connect to this one, to this IP address. Let's see again now. Oh, sorry, the IP address जो है मेरा वो ये है. I don't know क्या मैंने copy किया उसके अंदर. Let me see, that was wrong. This is the IP address. 263.8.136. Let me try one more thing. इसके अंदर destination IP address. This one. Okay, and I can say RDP. ये हमारी इंटरनल पॉलिसीज भी होती हैं इसके ऊपर. आई डोंट नो इफ दे विल अलाउ, क्या कहते हैं, ये मैं जो एजर पॉलिसी वाली बात कर रहा था ना, मे बी दे आर डूइंग समथिंग, बट लेट मी सी इफ क्या कहते हैं, समटाइम इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम टू गेट. लेट्स सी.
20.238.136. Anyway, I'll try. मैं इसको मैं check करके बताऊंगा फिर से सही है why it is not connecting. And so let's check also. यहाँ पे बहुत ज़्यादा Microsoft ने troubleshoot various different things similar to what we are doing, right? Customers को problem आती थी, so they are trying to see कि you can run the testing. कि आपने IP address it detects automatically and it tells you कि यार आप इस destination के ऊपर connect कर रहे हो, this VM के ऊपर RDP कर रहे हो, remote desktop protocol के साथ connect कर रहे हो. It's gonna check if this is allowed. It goes through everything and checks. Anyway, we'll let it run. ये तो public endpoint, इसी तरह private endpoint है. इसी virtual machine का, if I look at it over here, इसी virtual machine का private endpoint, which is accessible only from within the network, right? ये, and you can see also over here, private IP address. Yeah, there's a private IP address also over here. So there are multiple things, right? You can expose some service over here. You can expose some service over here. Those are more little bit more advanced stuff. But internally, you can connect. अगर आप network के ऊपर हो, you can connect with the private IP address, right? Which is always there. This one you can add and remove, right? The public IP address generally virtual machines का we don't want to have. इसके लिए मैंने क्या बताया था? How do you control it? How do you ensure that even though somebody can put the public IP address, they are disallowed or it's denied? क्या हमारे पास availability यहाँ पे? क्या चीज है हमारे पास Azure के अंदर? So we discuss this one, which is Azure policy. I can go into policy and I can create a new policy. So yeah, इसमें मैं देखूं if I have, for example, definitions, and I will show you यहाँ पे किस तरह definition होती है इसकी. There it checks automatically. All definition type, and I can say all categories. I can say public IP. The network interfaces should not have public IP. Okay. I can select this one. This is the policy definition, assignments, and I can do it assign, right? And I can assign it to my subscription, and I can assign this policy to a resource group as well. So yeah, हम अगर कर रहे हैं इस वक्त कहाँ पे over here, you assign this policy only over here. So yeah, I can exclude certain things, and then I can say review and create. इसमें और भी advanced settings है, but I'm not doing that. These are policies work, right? मैं एक simple अब जो कोई भी यहाँ पे आएगा, if I want to create a virtual machine with public IP, it will not allow me to do that. So yeah. So yeah. This is the beauty of policies. IPs public करने से क्या issue create होता है? क्या है? IPs public करने से क्या issue create होता है जो हम करने नहीं दे रहे? हमने क्लास में बहुत extensively हमने discuss किया था इस topic को. The point is, by default, it allows anybody to come and attack your resources, hackers. तो हम directly expose नहीं करते कोई भी public IP address. What we do is we use firewall. हम firewall के through expose करते हैं उसको. Because firewall can do lot of stuff. It's like having a guard at the gate. ठीक है? वो check करता है क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे, किस तरह का attack आ रहा है, if it's traffic is right or wrong and all that, right? And it can stop. That's the beauty of firewall, right? If you look at it, तो हम कभी भी किसी भी चीज को it's kind of like having your door open, right? Somebody can come and check and look around. Whether they want to take it or not, that's a separate thing, right? Anything. So हम कहते हैं we want to lock everything, and if somebody wants to come in, he needs to get permission and he needs to be allowed and he needs to be properly under supervision. That is done through firewall.
हमारे पास जो है Azure Firewall फॉर एग्जांपल, तो सारी जो ट्रैफिक आपकी आ रही है, सही है, यू हैव टू टेल इट क्या चीज आ रही क्या चीज नहीं आ रही. जो वेबसाइट्स होते हैं वेरियस डिफरेंट थिंग्स, उनके जो क्या कहते हैं, तो यू नीड टू अलाउ, यू कैन कंट्रोल एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट. फिर जो बाहर से ट्रैफिक आ रही है एजोर के ऊपर, वहां से आपके ऑन प्रेमिसेस के ऊपर आ रही है, यू कैन कंट्रोल दैट आल्सो. यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग, व्हिच ट्रैफिक कैन गो फ्रॉम वेयर टू वेयर. जो हैकिंग अटेम्प्ट्स होती हैं, इसके अंदर व्हाट हैपेंस, दे ट्राई टू फाइंड द पाथ. बाहर से आए, यहाँ पे कोई रास्ता मिला, यहाँ से आके देखा यहाँ से हम कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं. So what firewall does is by default it blocks access to everything. आप कहते हो कौन सी चीज कहाँ पे allowed है, on which protocol, which IP address can talk to which IP address, on what protocols only, right? So you lock down completely everything and allow only the access required, right? So this is called what we call zero trust. Yeah. And there are many things that happen. So this is what we do. Yeah. सर पॉलिसी की डेफिनेशन से पूछना था, जो डेफिनेशन आपने दिखाई थी वो जेसन फॉर्मेट, इज इट नेसेसरी फॉर इट टू बी इन जेसन फॉर्मेट के किसी और फॉर्मेट में डिफाइन हो सकती है पॉलिसी? नहीं, देखो डेफिनेशन इज ऑलरेडी गिवन. मैंने तो जेसन को हाथ नहीं लगाया, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने डेफिनेशन मुझे ऑलरेडी दी हुई है. सही है. अब इसके अंदर इफ आई नीड टू मॉडिफाई दिस वन आई कैन. सही है. जिस तरह इसने कहा ऑल ऑफ पैरामीटर्स है, अगर कोई मैंने कुछ चेंज करना है, सही है, बट ऑलरेडी जो मैंने आपको दिखाया था इसके अंदर आई मीन आई डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग. तो बाय डिफॉल्ट इट्स बिल्ड फॉर एवरी फॉर ऑल सिनेरियोज. कोई और एडवांस करना आपने, यू कैन गो इनटू जेसन एंड मॉडिफाई. सही है. बट जनरली स्पीकिंग आई मीन अभी तक जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन किए हैं कभी जेसन में जाना नहीं पड़ा. सही है. Mostly we are able to get whatever is out of the box and apply it automatically. सही है. अब उसके अंदर ये होता है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसको असाइन किया था, मैंने जब असाइन किया इसको आई कैन गो इनटू, फॉर एग्जांपल मैंने सब्सक्रिप्शन ली थी और दूसरा मैंने काम किया था उसको, नाउ आई कैन असाइन टू अ डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप. सही है. So I can do those kind of things. I can have exclusions, for example. सही है. And I can say don't apply policy to this one. So everything is pretty much available. But do understand, जो कुछ भी मैं काम कर रहा हूँ इस पोर्टल के अंदर, behind the scenes everything is JSON file, but it is hidden from us. ठीक है. वो JSON फाइल करके क्रिएट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू शो यू, वर्चुअल मशीन जो हम क्रिएट, मैं कुछ भी कर रहा हूँ यहाँ पे काम, देयर इज एवरीथिंग इज JSON. सही है. ये देखो मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट टेम्पलेट, मैंने तो इसको ऑनलाइन फ्रॉम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किया था. इफ आई गो बैक इनटू दिस वन टेम्पलेट जो है, see everything is going to become JSON. वो कह रहे हैं आपने जो कॉन्फ़िगरेशन की है, you can save this. इसमें सारी की सारी ये देखो, इसमें हमारे जो हैं ये हमने बताए थे, क्या कहते हैं, आपने उसमें एड्रेसेस बनाए थे, ये मैंने उसके अंदर वो जो सबनेट्स बनाए थे. सही है. एवरीथिंग इज नाउ क्रिएटेड एज JSON फाइल. JSON फाइल को सेव कर लूं, इफ somebody comes and deletes or modifies something, मैं इसको फिर से रन करूंगा, things will go back to normal. सही है. So it's an extremely powerful thing. तो ये पूरा जो सिस्टम है इट रन्स अंडर एज JSON फाइल. दिस इज व्हाट वी कॉल बेसिकली ARM, Azure Resource Manager. ठीक है. दिस इज द सिस्टम दैट जिसको आप यूज करते हो JSON के थ्रू टू सेंड द कमांड्स एंड क्रिएट द रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग. तो दिस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आप कर रहे हो अभी यहाँ पे, this is simply an ARM resource file creator, JSON file creator वो ये कर रहा है बेसिकली. सही है. जो आप ये बना रहे हो बेसिकली वर्चुअल नेटवर्क, आप कोई रिसोर्स बनाते हो, when you submit, what this portal is doing, it creates a JSON file and it submits on your behalf. सही है. आप खुद भी लिख सकते हो इसके अंदर क्या कहते हैं ये फाइल्स, and you can create and you can do from the command line also
you can do all these things. सही है? अगर आप देखो इसको ये जो है sorry ये देखो firewall है, it says deploy through ARM template. सही है? वो बता रहा है कि ARM template बनी हुई है. You can modify it, save it, and run this one. This is how it happens, right? और अब Microsoft ने नई लैंग्वेज बनाई है which is much simpler. It's called Bicep. सही है? So you can see it's much simpler, much more declarative, and all that, right? What happens is the Bicep compiler compiles this into JSON file for you because JSON is not easy to write. So yeah, this one is pretty straightforward, at least comparatively. So yeah, so this is what we do now quite a bit. Right? जिन्होंने multiple clouds में काम करना है, जिन्होंने I mean who are doing this thing quite a bit, they use these things and it's used very heavily. So yeah, but generally for one-off scenarios, you don't need to use the JSON file. But you should understand, right? What is JSON, what is ARM, what is Bicep, and all these things. It's a pura training course actually. I will show it that to you also. So yeah. Anji? हमने जो publicly available उसको हम क्लाउड में कोई भी यार आवाज बिल्कुल कट रही है आपकी. आवाज आ रही है लेकिन आवाज कट रही है बहुत ज्यादा आपकी. मुझे समझ नहीं है बिल्कुल भी. So basically we can say why do we do subnetting? Is it because to give permissions to different people to access different subnets? नहीं देखो सबनेट का सबसे पहला जो मसला है which is कि अगर मैं एक एड्रेस स्पेस है मेरी पूरी, if I don't do subnetting, it is like a flat. It's like a big conference room where everybody is sitting together. सही है? अगर मेरे पास 65535 एड्रेसेस हैं एक VNet के ऊपर, if I don't do subnetting, तो मेरा एक ही it's like a big conference room where all the resources are sitting together. Anybody can talk to anyone. सही है? मैं virtual machines बना रहा हूँ, मैं databases बना रहा हूँ. It's all flat address space that can have 65535 addresses. जब मैं subnetting करता हूँ, what I'm saying is I'm making compartments, right, in a big room. Okay, these IP addresses will be sitting in this one. These will be sitting over here. These will be sitting over here. जब मैंने उनको separate डाल दिया, then I can apply rules. Who can talk to who? So yeah, this is the main thing. This is what subnetting is. So yeah, permissions are totally separate. Permissions are when I give somebody permissions, a user or someone, there is only who can modify the settings. But first of all, why I'm doing subnetting? I'm doing subnetting. Okay, I put the resources, isolate the resources, and be able to apply policies between them. So yeah. By the way, देखो मैंने पॉलिसी लगाई थी, उसने कहा जी आई विल नॉट अलाउ यू टू चेंज दिस वन. सही है? उसने कहा जी यू शुड नॉट हैव पब्लिक आईपी एड्रेसेस. उसने मुझे इसको मॉडिफाई भी नहीं करने दिया. This is what policies do. Even though I am the owner, I can do everything. Policy denied me, declined this one for me. So yeah, मैं इसका जाके I can actually yeah, that's fine. I don't want to go complicate too many things. I will do one more thing over it. Let me see if it allows me to do this one.
सही है. So this is virtual network. और peering जो है, what is peering? Peering is that two VNets can talk to each other. सही है. Let me see if I can connect to this guy now. So peering जो होती है, that is when I create virtual networks, right? If I do virtual networks, ये virtual networks जो हैं, they're all completely isolated. They cannot talk to each other. Think about it as buildings in fast university. आपकी यूनिवर्सिटी में different buildings हैं. अगर हम उनका दरवाजा बंद कर दें, they are all isolated. They cannot talk to each other, right? Different buildings. So a campus can be a subscription. उसके buildings are like virtual networks. So yeah, and they cannot talk to each other by default. So the way you allow them to talk to each other, जिस तरह हमारी building है, which is connected to CS department, right? Think of that as the peering. Peering allows two VNets to talk to each other. Connects your private networks directly together. So yeah, and the way you do is you do over here peerings. और मैं उसको कहता हूँ जी, इस network को आपने peer करना है. Let's say with this one. So yeah, I can say, for example, VNet source to destination and destination to source. और इसको मैं नाम दे रहा हूँ source to destination. Okay. अब इंटरेस्टिंग पार्ट है, उसने कहा जी आपकी ओवरलैप हो रही है कि आपके जो दोनों नेटवर्क हैं, they have common address space. You cannot peer them. So that gives you a very important thing. Two networks which are being connected should not have common address spaces. क्योंकि उसको पता होना चाहिए which traffic will go where. अगर common addresses है, it doesn't know कि इसी नेटवर्क का हिस्सा है कि remote नेटवर्क का हिस्सा है. Yeah, it's very critical to have both networks with totally different address spaces. Yeah, that is one thing. But coming back to our point, the peering. ये peering है basically, and it allows us to connect two networks together. So yeah, that's all there is to it. It's very, very straightforward. It is part of the our virtual networking. So yeah. Then we come to what we call virtual private networking. Virtual private network ये कहता है, अब इसके अंदर हमारी प्रॉब्लम डोमेन क्या है इसके अंदर? प्रॉब्लम डोमेन इज कि हमारा जो है नेटवर्क एज्योर के ऊपर इट्स सिटिंग ओवर हियर, राइट? और हमारा ऑन प्रेमिसेस जो है इट इज सिटिंग ओवर हियर, राइट? इन सम सिटी, इन सम कंट्री, दिस इज सिटिंग समवेयर इन द क्लाउड. सो या, how we allow them to talk to each other. Yeah, that is the problem statement. And the way we do is we create what we call a VPN, virtual private network. So yeah, sorry, VPN. And what VPN does is, as you can see, the name is virtual private network. Virtual private network means it's a private network but it's virtual. आपका आधा जो है वो on premises में है, आधा Azure के ऊपर है, और but when you connect them through VPN, it acts like one big network, right? All of it. And once, if it's a one big network, that means addresses should not overlap. अब यहाँ पे address space Azure की 10.10.00.16, यहाँ पे on premises 10.0.0.0.24. ये ओवरलैप हो रही है कि नहीं हो रही ओवरलैप? Is this overlapping 10.0.0.0.24 with 10.10.0.0.16? नहीं हो रही सर. क्यों नहीं हो रही? फर्स्ट ऑक्टेट ही डिफरेंट है. और उसके अंदर सिर्फ आखिरी दो ऑक्टेट मिले हुए हैं 24 वाले के अंदर, और 16 वाले के अंदर 3 मिले हुए हैं.
16 के अंदर हमें आखिरी 2 ऑक्टेट मिले हुए ना सारे के सारे यूज करने के लिए, हमें यहाँ पे ये वाला ऑक्टेट मिला हुआ यूज करने के लिए। क्या इज इट पॉसिबल कि इसका कोई एड्रेस यहाँ पे अवेलेबल हो ऑलरेडी, या इसका कोई एड्रेस अवेलेबल हो ऑलरेडी यहाँ पे? इज इट पॉसिबल? हो सकता है ये वाला वहां पे, या ये वाला इसमें से कोई यहाँ पे हो सकता है। हमने कहा था for two networks to connect to each other they must be completely unique. The questions, these kind of things I will ask on the exam, so yeah, and on assignments please be very clear on these things. ये देखो हमने कहा था this will go from 1010 and then this will go from 0 to 255, this will go from 0 to 255. So yeah, is this clear? This is 10.10. Whatever after this, but this one will go from 10.00. Only the last octet will change. 10.00 what? 0 to 255. So all these addresses over here are 1010 anything. This is 10.00 anything. That means they're completely unique. This is in 10.00. This is in 1010, right? Completely different, right? So there is no overlapping. On premises के ऊपर एक और भी है 20.00. There is no 20 over here. That means there is no overlapping. So yeah, it's a very critical thing. Please be very, very clear on this one. So yeah, once you have this one, आपको यहाँ पे VPN appliance चाहिए होती है. The appliance that can create a virtual private network. So yeah, Azure पे we have something called VPN gateway. VPN gateway, virtual network gateway. So yeah. And virtual network gateway attaches itself to a virtual network. You can see. So yeah. और वो कह रहा है कि I need an address. Anyway, I don't want to go into detail. It attaches itself automatically to a virtual network. So yeah. उसका अपना भी है IP address and all that. But this is what we are creating, and this attaches itself to the virtual network in Azure. जिस तरह हमारा है, for example, हमारा यहाँ पे ये वाला है. There are different generations, there are different SKUs and all that. It's all about speed, scalability, kitni bandwidth and various different things, and the price increases also as you get. And this is the availability zone. This has no failover. This has availability zone. This has DR component all automatically built into this one. Automatically, जो हमने पढ़ा था availability zone के अंदर, that some services automatically replicate. These VPN gateways, they have automatic replication to availability zones as well. तो ये AZ लिखा हुआ है इसके ऊपर. जो भी आप सेटिंग करोगे इसके अंदर, it will get replicated automatically to the availability zone. So yeah. So depending on your scenario, you will pick the AZ or non-AZ one. I can say gateway, VPN, VNet, POC. So yeah. ये भी अगला टॉपिक आ रहा है एक्सप्रेस राउट का. So yeah. I don't want to go into this one, route based, policy based, this advanced topic for this one. ये आगे जो हमारा नेटवर्किंग का कंप्लीट कोर्स है, we go into these kind of things in that one. So yeah. और इसके अंदर इसका IP एड्रेस भी चाहिए, पब्लिक IP एड्रेस. हर चीज सेपरेट रिसोर्स है Azure. हम यहाँ पे इसका पब्लिक IP एड्रेस बनाते हैं. So yeah, I will disable this one. So this is also part of the advanced networking scenarios mode and the BGP and those kind of things, basically. Okay. So once we have this one, it creates the virtual network gateway. I'm creating this part. So yeah, so there are a lot of companies that create this one. There's a industry standard companies, for example, like Cisco VPN solution, right? बहुत companies use कर रही हैं इसको, Cisco को. So yeah, ये endpoint VPN solutions ये companies implement किए हैं. Cisco is there. उसके बाद हम F5 for example,
VPN. F5 is also one of the very big companies. सही है? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, for example, इस्तेमाल हो रही है. One of the industry standards also F5, big IP. It is the name of the company is not, I think maybe it's f5.com. Anyway, तो ये वाली कंपनी है. सही है? Cisco, F5 और FortiGate VPN. सही है? So these are some of the very big companies who are providing VPN solutions. जिस तरह Microsoft VPN gateway दे रहा है आपको Azure के ऊपर, ये companies आपको on premises and on Azure आपको VPN solutions दे रही हैं. सही है? So you can connect from Azure to your on premises. कई दफा companies कहती हैं जी हम F5 use कर रहे हैं अपने on premises. We want to use the same F5 VPN solution over here also. They can use it, no problem. सही है? But anyway, this is a very cost-effective solution. Microsoft ने cloud native solution दिया हुआ है. It's a PaaS service. There is no virtual machine to manage and all that, right? So, which makes it a very nice solution. So you have two VPN gateways, one on Azure, one on premises that you have. And it doesn't matter which company, you can mix and match anything, right? Because main cheez hai that they are creating an IPsec tunnel, right? This is IPsec, IKE, site-to-site, virtual private network tunnel. This is site-to-site network. One site in Azure, one site on premises, you are creating this one. IKE is the protocol और इसकी settings होती हैं. सही है? तो इसकी अगर आप देखो VPN की, for example, Azure VPN settings, yeah. Gateway configuration settings, right? तो यहाँ पे talks about, for example, तो ये देखो जो हमारे बता रहा था वो कि आपकी क्या कितने connections हो सकते हैं, कितनी bandwidth मिल रही है, so on and so forth, right? With the different these things. That is one thing. ये है algorithms के security encryption algorithms basically. सही है? For various different gateways. ये settings है basically. सही है? ये policies है हमारी. ये IKV2 की policies हैं. So when you do these things, you set up these policies, right? I don't want to go into the detail, but if you are interested in a VPN, you can read more about it. सही है? तो ये बता रहे हैं आपको IKE जो है connections basically. सही है? तो basic आपको IKV1 देता है सिर्फ, which is less secure और basic SKU. And जो बाकी SKUs हैं आपको वो आपको more advanced वो देते हैं basically. आपको IKV2 connections भी देते हैं. सही है? And you can create many different tunnels, right? इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखो gateway settings के अंदर, it tells you about the number of tunnels. सही है? ये देखो maximum connection, maximum tunnels. तो कई कस्टमर जिनकी बहुत ज्यादा साइट्स हैं छोटी different offices हैं all over the kingdom, all over the region, countries, वो कहते हैं we need much more number of tunnels. सही है? So then you have to pick something else, or you have to do active connections basically. सही है? So on and so forth. So okay, if you need more than 100 site-to-site tunnels, use virtual WAN. This is our another, a state-of-the-art solution for VPN. सही है? वो कह रहे हैं आप ये use करो. It's more expensive, double the cost है इसकी, and it goes up from there. But again, if you need massive solution, we have this one as well, right? Virtual WAN. Anyway, कहने का मकसद है आपके दोनों तरफ VPN gateways होते हैं, VPN appliances होती हैं, and then you connect them over the network, and it creates a secure tunnel. And this whole thing gets translated into a big, secure virtual network. And as I mentioned, it's a virtual network, right? It's not physical network. क्योंकि आधा network यहाँ पे है, आधा network Azure के ऊपर है. It creates one big network basically. सही है? There is an important part to understand. But again, the critical things you need to understand, which is the addresses on both sides cannot be overlapping. It must be unique. सही है? तो Azure के ऊपर हम जब भी networking करते हैं, we make sure that none of the addresses on Azure are being used in on premises already. And a lot of very big disasters have happened when this was done. कई दफा हमने किए कस्टमर के लिए,
for example, in the virtual network, where they gave us the address space which is already being used in on-premises, right? We had to delete everything, redo everything on Azure, right? It is that critical because आपकी routing नहीं काम करती. It is just like Lahore में somebody gives me address और वो दो addresses they're exactly same. So yeah, on two different sides of the city, you will have no clue how to reach them, right? How to reach that person. वो कोई कहे जी मॉल टाउन यहाँ पे भी है. Mall town is on the other side of the city as well, right? With a totally different coordinates, right? You will never be able to reach, right? This is exactly what happens कि आप कह रहे हो कि ये VNet जो है, it is sitting on premises and is sitting on Azure as well. If this overlapping happens, right? That is why just like Lahore के अंदर towns है, Faisal Town, Model Town, Garden Town, right? These are like subnets. And each subnet has its own addressing. आपका तो ये house number ये block है in this one, in this town. This is what subnetting is essentially, right? So this is what VPN is. That is to connect two different networks together and form a one large virtual network. Virtual means it's not physically together, but through some means, which is the VPN gateways, we are creating the IPsec tunnel, virtual private network tunnel, to join both of them and to flow traffic between them. Yeah? And I'll give you show you something basically. Let me just show you. दिखाना चाह रहा हूँ अगर मैं, let me see. Anyway, I don't want to go into too much detail. सही है? Excuse me, sir, am I audible? जी बिल्कुल. सर आपने कैलेंडर पे जो क्लास की टाइमिंग है वो 10 तक रखी है, तो आपने इंटेंशनली रखी है या क्योंकि नॉर्मली जो है 1 घंटा और 20 मिनट की क्लास होती है? मैं थोड़ी सी लंबी रखी है फॉर रीजन कि मैं आई वांट टू टेक अ 10-minute ब्रेक. मेरी नमाज का टाइम हो गया दरमियान में. नंबर 2, वी हैड डबल द सेशन. तो सर मेरी एक सजेशन है, अगर हम 2 हाँ. घंटे की क्लास की बजाय हम फ्राइडे को एक और क्लास रख लें. यार ये आप सब डिसाइड कर लो. और मसला है ना फ्राइडे को फॉर मी इट्स अ वीकेंड आल्सो. और क्या कहते हैं हम, क्योंकि मेरा असल में था कि मैं वी कैन डू मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे. सही है. बट लेट्स डिस्कस, लेट मी फिनिश दिस, लेट्स डिस्कस एट द एंड हाउ वी वांट टू डू इट. ओके, लेट्स डू इट. मसला क्या है लंबी क्लास का? सर असल में इशू ये है ऑनलाइन लेक्चर्स में ना अटेंशन स्पैन इतना लंबा, लाइक अराउंड 2 आवर्स रखना ना. अटेंशन स्पैन का सर इतना इशू नहीं है, वो एक लिमिट के बाद वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड होने लग जाती है. सही है. लेट्स कीप इट especially after a full day at university, sir. देखो, this is part of a university. This information was supposed to be given to you on the day anyway. But I do understand. No, you're right, I mean, but we can keep it. If it could have been 1 hour 30 minutes like it is in the university, I guess that would be better. Fair enough. Maybe, I think I can keep it to 130. नहीं, I was, देखो मसला क्या होता है, क्योंकि topic, if I go over the topic generally, what I'm trying to do is add much more interaction or demos. That's why class के अंदर I don't do demos because material cover करना होता है. But it's like a catch-22 situation for me because topic is advanced. A lot of people don't understand. सही है. और अगर मैं, for example, networking के ऊपर I took almost 30-40 minutes, right? This is not supposed to be taught like this, right? I can give you some high level and I can give you go watch videos or something, right? Because we cannot afford to spend this much time on each thing. But this is a lot of prerequisite information. Yeah? So for me, I'm trying to balance both things and I'm trying to see how can I add some more time. This is my basically work. So, yeah? But if you look at it, देखो हमने अपना course की तरफ से, I mean, we have covered 2 slides barely, right?
So I mean, I understand your point. We can keep it to hour and 15 or hour and 20 minutes. So yeah, I'm perfectly fine. But do understand, right? I'm trying to do certain things that we want to finish some material. But if I glance over it and go like this, lot of stuff will not make sense to you because it has lot of prerequisites. Yeah, I am expecting that you guys know some networking. अब उसके लिए base बनाने के लिए and to give you this kind of little bit deeper understanding, that's I'm spending time. So yeah, so this is my challenge, right? कि आपको to give you some hands-on demo to show you these things ताकि आपकी proper understanding develop हो, right? This is my challenge, right? तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो वो उसके लिए एक सोल्यूशन ये है कि वो फिर एक क्लास एक और की जा सकती है. I mean, that's a good solution. So if you guys agree, we can add one more class. So yeah, क्या कहते हो आप लोग? I mean, मसला ये ना देखो जिस तरह मैंने संडे को क्लास ली थी. I think nobody came. जो मैंने review class ली थी, I went to some of the stuff. Very few people came. I don't want to make it forceful कि मैं कहूँ जी आपने आना है लाज़मी attendance होगी. And then क्या कहते हैं? Because from university perspective, I'm not allowed to do more than one makeup class per week. So, yeah. So it becomes an optional thing which I think nobody will come. So I mean it's a very challenging situation for me कि मैं कितना deep जाऊं और I mean ये मैंने class में पढ़ा चुका हूँ दोनों चीजें actually. I'm still went into retail. So yeah. But your points are valid, right? I mean ये आप मुझे बताओ क्या कहते हैं what is the best way, because I don't want to skim over topics कि आपको value ना मिले उसमें से. So yeah, that is my challenge. I want to get you you understand these things, right? This is my challenge, right? तो यहाँ पे अगर आप जो लेक्चर्स लेते हैं क्लास के अंदर उसके अंदर आप यू गो टूवर्ड स्पेसिफिक कोर्स डिटेल्स and like make separate videos regarding in-depth applications and demos of all that and upload on the YouTube channel that you have been uploading. Wouldn't that be more feasible? देखो वो मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी. जिस तरह जो मैंने आज का वो किया बेसिकली ये वाला जो है लेट मी सी अगर जो मैंने किया था यहाँ पे let me just go back on the classroom. सर इन माय ओपिनियन मैं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ. ये जो वीडियोस बना के अपलोड करना वो आई थिंक रेगुलरली कोई नहीं देखता, तो वो सिचुएशन ये होती है ऑनेस्टली कि वो पेपर की रात से पहले वो सब बैठे होते हैं कि हम वीडियोस देख लें 2x स्पीड पे. नहीं मुझे बड़ी देखो इन सब चीजों का मुझे बड़ी अच्छी तरह अंदाजा है. इसीलिए आपको बहुत डिसिप्लिन चाहिए अगर मैं कोर्स मटेरियल पोस्ट करता जाऊं और आप जाकर को मैं एक्सपेक्ट करूं आप लोगों से. ये क्लास के अंदर मुश्किल होता है लेट अलोन टू कि मैं एक्सपेक्ट करूं. सही है. और उसमें मसला ये होता है कि अब मैं उसके लिए आई ट्राई कि मैं 5-10 मिनट से लंबी वीडियो ना डालूं. आई लुक अराउंड मेनी थिंग्स बिफोर आई गिव यू समथिंग. सही वो मैंने एक वीडियो डाली भी नेटवर्किंग की, वो 1 घंटे की है. बट वही चैलेंज आता है कि हु विल वॉच इट, राइट? So this is the best way basically where we can do that. So anyway, I'll keep it hour and 15 or 20 minutes for the next week and the next sessions as well. So yeah, we'll do that. Or I think anyway, so I will try to skip a little bit of details or I will skip a little bit of demos, right? This is because otherwise we'll not complete the material. So मैंने इसलिए intentionally मैंने time extra रखा था just for those kind of scenarios, right? I can spend some time to go into the detail. So yeah. So but your concerns are valid and I have certain things basically in my mind. Okay, how can I go into details of these things? ताकि आपको deeper understanding develop हो. Because if you don't do this in class, it's gonna be very rare. कि 120 बच्चे हैं टोटली 104-5 हैं. I think barely less than 10% will go and spend time, right? So this is my challenge basically, and topic is very critical, right? Yeah, actually real life stuff which is get used, which we'll be dealing with it hopefully, right? So that's my challenge. But anyway, let's try to balance this thing. And what I will do is I will do extra classes on demand. If you guys feel, if there's a request, we can do extra sessions, extra things, right? We can do that. Excuse me, sir. सर मैंने पूछना था कि आप रिकॉर्डिंग्स वगैरह शेयर कर देंगे ना, क्योंकि नेट बार बार इंटरप्ट हो रहा है तो
आप लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर देंगे शेयर? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं रिकॉर्ड मैंने इसीलिए इसके अंदर किया कि मैं रिकॉर्ड करूं सो आई कैन शेयर एब्सोल्युटली, बिल्कुल ये मैं शेयर कर दूंगा। तो ओके सर, थैंक यू। So anyway, so yeah, let's get done. It's तकरीबन I think it's hour and 15 minutes already. So go over this. मैंने इसका सारा मटेरियल डाल दिया मैंने क्लास में ऑलरेडी। इसका अगर आप देखोगे इसके अंदर नेटवर्किंग के अंदर सही है। If you will see, अभी आगे भी important topics आ रहे हैं, but let me see. 4.5 and there's 4.6 should be there somewhere in the networking part. I think it's over here. Storage services, yeah, networking DNS. इसमें you will see ये भी topics आ रहे हैं, DNS के आगे आ रहे हैं और different चीजें आ रही हैं, express route आ रहा है सही है। ये IP addresses की 3-4 मिनट की वीडियो है, please watch it. जो आज मैंने समझाया है ना, this is what it is, right? ये VPN connection, this is also very nice one, right? ये तो खैर वो है क्या कहते हैं, ये इसी का मटेरियल है बेसिकली, सही है। The virtual network, this is 52 minutes. This is a very nice video जो हमने आज डिस्कस की काफी ज्यादा सही है। He goes into more detail and more hands-on stuff. So if you have time, please watch it. सही है। ये भी हम DNS पढ़ेंगे आगे, express route and other topics will complete inshallah tomorrow. सही है। So inshallah, let's get done. If you guys feel we can do a class, one more class on Friday as well. सही है। I don't have any problem. Saturday or Sunday also we can do that. सही है। But officially, it will not count as a class because we can only have 3 classes, maximum 1 makeup class, right? So they will not allow me to have 1 more class, 4 classes in a week. So yeah. So that was also I was trying to see किस तरह मैं 3 classes के अंदर extra time ले लूं. Okay, you don't have to come back for a 4th day. So yeah. Anyway, ये सारे challenges that we have to see what is the best way to do. I will try कि मैं demos थोड़े से कम करूं. And I'll try to give you these 5 to 10 minute videos on those topics. So yeah, you can go and watch. Yeah? But again, please do. It's practical stuff, and it's very very critical, right? और ये सारा basis है आगे advance the next level of certifications और आगे जो next level of knowledge है सही है? Because we are covering, हम base बना रहे हैं अभी सिर्फ इन सब चीजों की, सही है? सही है इंशाल्लाह. Any questions? Anybody has any question? We'll cover the express route tomorrow, inshallah. So yeah, we'll do this one tomorrow. Express route and DNS and the storage services will start. So yeah. The DNS can be, I want to give background information on DNS service because you will not understand DNS in Azure if you do not understand DNS in general. So yeah. So we'll go into those things as well. सर मेरा सर एक क्वेश्चन था सर हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है वो हम पॉलिसी से हाइड कर देते हैं कि शो नहीं करना, लेकिन पब्लिक आईपी एड्रेस का तो मकसद यही होता है कि वो पब्लिकली अवेलेबल होता है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ हम क्लाउड को अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं कि ताकि हमारा नेटवर्क पेनिट्रेट ना हो जाए, तो हमने अपने नेटवर्क का जो वो एड्रेस है वर्चुअल मशीन्स को पब्लिकली अवेलेबल नहीं करना। देखो एक तो वो चीज है, एक जनरल एंड आल्सो जो आपने देखा मैंने पॉलिसी कहाँ अप्लाई की थी बाय द वे, मैंने पॉलिसी जो अप्लाई की थी आई डिड नॉट अप्लाई ऑन द होल सब्सक्रिप्शन, मैंने उसको अप्लाई जाके किया था एक रिसोर्स ग्रुप के ऊपर, सही है? उसका क्या फायदा हुआ कि आई कैन सिलेक्टिवली कंट्रोल कहाँ पे पॉलिसी अप्लाई हुई कहाँ पे नहीं होगी, बिकॉज आई वांट टू बाईपास दिस पॉलिसी समवेयर एल्स, सही है? मेन चीज है कि जो मेरी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, जो मेरे क्रिटिकल रिसोर्सेज आई कैन अप्लाई द पॉलिसी, जो मेरे नॉन क्रिटिकल है, आइसोलेटेड है, दे आर नॉट कनेक्टेड एनीवेयर, आई कैन अप्लाई, आई डोंट हैव टू अप्लाई द पॉलिसी, सही है? मेन चीज है आपके पास ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं टू कंट्रोल हाउ यू वांट टू डू थिंग्स, बट एज अ जनरल प्रिंसिपल दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, because we have lot of ways to get into these things through other ways, through very secure ways, through Azure. अभी हमने टच नहीं की वो चीजें. फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू शो यू, अगर मेरी वर्चुअल मशीन है ना, लेट्स से देयर इज नो आईपी एड्रेस, लेकिन Azure के अंदर सर्विस है दिस कॉल्ड Bastion, सही है? ये देखो इट्स गिविंग मी is allowing me to connect directly using a private IP, सही है?
ये private IP से it allows me to connect. So I don't need public IP addresses. I'm going into this one. So yeah, I'm going into this one, this virtual machine. और ये देखो virtual machine का जो है IP address इसको मिला हुआ है, but it's allowing me to Bastion service. What it does, it allows you to connect over a private IP address. So yeah, if you go over here, connection setting, you can see I can do whatever, and with this port, for example, and I can connect, right? Bastion service hai. See, protects your virtual machine by providing lightweight browser-based connectivity without the need to expose through public IP. Yeah? So whatever we want to do, whatever we want to connect from public, from a browser or whatever from internet, it allows us to do. We have very, very sophisticated and nice services available to do whatever we want to do. Yeah? We want to close the gap, security gaps. So Microsoft provides, Azure provides you a lot of very nice services to connect to anything you want securely. So yeah, that is the main thing. The issue is not about I want to access. The issue is I want to access through internet securely. That is the main thing. And a lot of services are available to you for that. Okay. जी sir, thank you so much. I mean, there are a lot of details. ये actually advanced networking इधर चीजें आती हैं basically. But this is service मैंने कहा दिखा दूं आपको, सही है? ये वाली चीज available है. देखो पूरा just virtual machine का पूरा menu है that we haven't really touched. सही है? We have done very, very basic stuff in virtual machines. There are diagnostics, there are networking, there's connectivity, there are logs, there's alerts, many, many different things. Updates, automatic updates, backups, disaster recovery, right? Many different things. If you go into more advanced administration, your AC1044 a lot of stuff will get covered over there also. It's more advanced administration course in Azure. So yeah. So we are now getting barely familiar with different things, right? यहाँ पे scaling है, यहाँ पे various different चीजें हैं यहाँ पे. So yeah. This is what it is essentially.